So good morning students. We will be continuing with our next lecture. The lecture name is Cell, EMF and internal resistance. We will discuss these three concepts. Cell, EMF and internal resistance. So what is this cell? So first of all, we will be discussing the concept of this cell. So cell, it's a device, like you have seen cell in clocks. Okay. In cell means a chemical energy stored, which is mainly used to provide the electrical energy. It's a source of energy. It's a source of energy. Means it's a device in which chemical energy is stored that means and this chemical energy is converted into the electrical energy, and it is converted into electrical energy. So this is the concept. This is a cell. So cell, you know, it has one positive terminal and it has one negative terminal, like this. So positive charges, they will travel in this direction. So positive charges, they will travel in this direction because positive will repel the positive charge, so they will travel in this direction. Sorry, if we draw the circuit like this, positive, negative, so it will travel like this. Positive charges, they will travel in the direction of clockwise, and electrons or negative charges, they will travel anti-clockwise. So positive charges, because positive will repel the positive, so like this, negative will attract the positive, like this. Positive charges travel clockwise and negative charges travel anti-clockwise. So this is next concept. This is the shape of a cell. So we will look for the explanation with what is inside the cell. What causes this electric current to flow inside the cell? We will discuss that. So second thing is, like this, I'm going to divide this board into two parts. So in cell, electrolyte is there, like acid is present in our batteries. It's type of electrolyte. So electrolyte can be H2SO4 or it can be ZnSO4. So electrolyte is present in a cell, which it can be H2SO4 or it can be ZnSO4. So H2SO4, when it break into ions, it is like this. H positive means one electron positive, one electron positive, and SO4 two electron negative, like this. And when zinc will break into ions, it will be like this. Zn2 plus, two electron plus, and SO4 two electron negative, like this. These ions, they are having energy of 15 joule, suppose, and they are having energy of 20 joule. That means
they are having more energy, and they are having less energy. But ZnSO4 is more stable. It's more stable. Means SO4 na, because if ZnSO4 is also, this is also a system and this is also a system. It's a high energy system, it's a low energy system. Every system will try to remain its lowest energy state. So lowest energy state is this ZnSO4. So it's more stable. This compound is more stable and less reactive. Okay. So electrolyte can be H2SO4 also, ZnSO4 also. And this compound is having less energy. So it's a more stable compound and it's a less reactive compound. Because this is a system ZnSO4, because in this system one ion is this, one ion is this. This system will try to remain in lowest energy state. Okay. So this ZnSO4 is more stable and it's a less reactive, like this. If you want to break this ZnSO4 na, you have to give it positive 20 joule energy in order to break it. You have to give it plus 15 joule energy in order to break this. Because it is having minus 15 joule energy, in order to break H2SO4 you have to provide plus 15 joule energy to this H2SO4, then only it can break. And in case of ZnSO4 you have to supply more energy, that means it is less reactive and more stable, like this. So this is not of the NCERT topic, okay, I'm just giving explanation. This electrolyte can be used in a cell as compared to this electrolyte because it's more stable, okay. So we will be using this kind of electrolyte only. Suppose now I'm going to explain you the structure of a cell from inside. There are two electrodes, means what is this electrode? This is a copper, a piece of rod, copper rod, it's electrode, and this is zinc. Okay, means this cell, electrolytic cell, it consists of two electrodes. Copper and zinc, and these two electrodes, they are dipped in a electrolyte ZnSO4. They are dipped in a solution or electrolyte and dipped in ZnSO4 electrolyte. So what happens when they are dipped? What happens? So ZnSO4 will try to remain with zinc as compared to hydrogen. SO4 क्या चाहता है, वो ज़्यादा जिंक के साथ रहना चाहता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, बिकॉज ये ज़्यादा स्टेबल है. तो वी हैव हेयर इज H2SO4, sorry, I am said it's dipped in ZnSO4, it's dipped in H2SO4 electrolyte. Okay, so what happens, this SO4, it will try to go near the zinc na, but it's a zinc metal, zinc electrode, it's not a zinc ion. SO4 is attracted towards the zinc ion, but there is no zinc ion. So step number 1, zinc will break into ions. So zinc will break Zn2 positive plus 2 electron, like this. So it will become Zn2 positive, and there will be a lot of 2 electrons here. Okay,
So zinc electrode will develop a negative potential due to electrons. There so many electrons are present on the zinc electrode, so it develop a negative potential. Zinc electrode will develop a, because one side of cell is at positive potential and one side of cell is at negative potential. Zinc electrode will develop a negative potential. So step number 1, zinc broken into ions and zinc developed a negative potential. So what happens next? This electrolyte will also break into ions in step number 2. We will fix a conductor here, and we will connect a load here like a bulb, like here. Okay, so these electrons, they will travel through the conductor and reach the copper electrode. Okay, electrons from zinc travel to copper electrode through conductor. Okay, when these electrons are passing through the load, that means current is flowing through the load and load will operate. Flow of charges per unit time, that is current. Current is flowing through the load and load will start operating because current is flowing through the load. So electrons, they will reach here now. So what happens next? This electrolyte will break into ions, H positive ions, 2H positive ions, and SO4 2 negative. So this SO4 2 negative will try to, it will be attracted by this zinc 2 positive ions. Okay, and electrons, they have reached to the copper electrode here. They will attract this 2H positive ions. They will attract them and they SO2. SO4 2 negative will move towards the zinc electrode and 2H positive ions, they will move towards the copper electrode. Electrolyte break into ions. As H positive ions are moving towards the copper electrode, so more number of H positive ions will be on copper electrode. So copper electrode will develop the positive potential. SO4 2 negative will move toward Zn2 positive. So what will happen? Zn2 positive combine हो जाएगा SO4 2 negative and what will be formed? ZnOSO4 electrolyte बन जाएगा. दोबारा से फिर ZnSO4, it will become ZnOSO4. Okay. Next, अब 2H positive ions, we will say भी 2H positive ions कहाँ reach होंगे? 2H positive ions, they will reach the copper electrode. और वहाँ पे ऑलरेडी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देयर. इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन कर जाएंगे 2H पॉजिटिव आयन के साथ और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी. 2H पॉजिटिव आयंस विल रीच कॉपर इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव आयन पहुंच गया तो ये डेवलप कर जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल एंड इट डेवलप पॉजिटिव पोटेंशियल. एंड ये दो H पॉजिटिव आयंस हैं, दे विल रिएक्ट मिक्स विद दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बिकम हाइड्रोजन गैस. सो हाइड्रोजन गैस का पता कैसे लगेगा? बबल्स ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म्ड ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड. बबल्स देखेंगे हमें, बबल्स विल बी फॉर्म्ड on copper electrode. Okay, so this is the working of a cell. Electrons, they are moving through this conductor like this and load is operated on और load operate होता जा रहा है.
अंदर क्या हो रहा है, ZnSO4 बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। H2SO4 ये ख़त्म होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है ऐसे। ओके, सो दीज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी ब्रेकअप होते जा रहे हैं इनटू आयंस। So these chemical processes, they are taking place inside the cell, but this is not in the CBSE syllabus. Okay, what is in the CBSE syllabus will start now. So you will remember the step number 1 is this, and step number 2 is this, and step number 3 is this. So electrons are traveling through the conductor, because electrons are released here, zinc electrode, they are traveling through the conductor, and they are means passing through the load per unit time. So load is being operated on, because current start running through the load will start operating on. So what is in this syllabus now is going to start. So this is the internal working of a cell. So what happens in the cell? You know, the SO4 negative ions, they are moving towards the zinc electrode, zinc 2 positive ions or zinc electrode. Okay, so they are moving towards this. How they are moving? They are moving through the electrolyte. So ions are moving through the electrolyte towards the electrodes. सो ये इलेक्ट्रोलाइट उसको क्या मीन्स देगा, रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। सो आयंस दे विल सफ़र द रेसिस्टेंस बाय द इलेक्ट्रोलाइट। जब आयंस जिंक की तरफ मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट उनको रेसिस्ट करेगा, अपोज करेगा उनके फ्लो को, तो वो एक इंटरनल रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। सो आयंस विल बी अपोज्ड by the electrolyte when they are moving towards electrodes, when they are moving toward electrodes. दिस इज इंटरनल रेसिस्टेंस, इसी को इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। दिस इज इंटरनल रेसिस्टेंस। सो व्हेन आयंस आर मूविंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट ना, द इलेक्ट्रोलाइट अपोज द फ्लो ऑफ आयंस एंड दैट इज नोन एज इंटरनल रेसिस्टेंस। सो ये इंटरनल रेसिस्टेंस की डेफिनेशन बन गई है। दिस इज द डेफिनेशन, मीन्स ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ आयंस दैट आर मूविंग टूवर्ड द इलेक्ट्रोड इनसाइड अ सेल, दैट इज नोन एज इंटरनल रेसिस्टेंस। सो हर सेल की एक इंटरनल रेसिस्टेंस होती है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। सो एवरी सेल हैज इंटरनल रेसिस्टेंस। सो किस किस फैक्टर्स पे ये इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड करती है? फैक्टर्स on which internal resistance depends. So resistance किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? रो एल अपॉन ए। सो इलेक्ट्रोलाइट में, सेल में इलेक्ट्रोड्स होते हैं, रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन दी लेंथ ना। अगर ये लेंथ बहुत ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोड्स के बीच में तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी हाई होगी। इट डिपेंड्स ऑन दी सेपरेशन बिटवीन दी इलेक्ट्रोड्स। इफ सेपरेशन इज मोर, इंटरनल रेसिस्टेंस विल बी मोर। सो सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड इज मोर, सो क्या मोर होगा? देन इंटरनल रेसिस्टेंस विल बी मोर।
So next factor is it depend on the area. If area is more, resistance is less. This electrode, this is a plate na, this plate is having some area dipped in the electrolyte. This is electrolyte na, so this area of electrode plate is dipped in a electrolyte. So this area of electrode plate is dipped in a electrolyte. If more area is dipped, less internal resistance will be there. If more area of electrode plate is dipped in electrolyte, then less internal resistance will be there. ये सेकंड फैक्टर. अगर इलेक्ट्रोड प्लेट का ज़्यादा एरिया इलेक्ट्रोलाइट में डिप होगा तो उस पर कम इंटरनल रेजिस्टेंस एक्ट होगी. इफ मोर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेट is dipped in electrolyte, then internal resistance is less. So these are the two factors on which the internal resistance depends. So internal resistance topic is done. Okay. So this is a cell. This is the positive terminal of a cell and this is the negative terminal of a cell. So this is connected to suppose load, and the load is having some resistance R. Okay. This is negative and current I is running through this circuit. This is cell. Okay. So if I am moving the charge from A to B, suppose I have started from A to B. Okay. I am doing the work to move the charge from A to B. If I am doing the work to move the charge, that will be potential difference. That which potential difference? Across AB. And this potential difference is known as terminal potential difference. Terminal potential difference. यहाँ से लेके जो यहाँ तक मूव कराने में वर्क डन करना पड़ेगा, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन on a unit charge. यूनिट चार्ज को मूव कहाँ कराना है? On a unit charge to move it from one terminal of the battery to the other terminal. To move a unit charge, to move it from one terminal of battery to other. So टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? V से. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V. ओके. यूनिट क्या होगी इसकी? कूलम, सॉरी, जाउल अपॉन कूलम. जाउल अपॉन कूलम, एंड दैट इज वोल्ट. इट्स SI यूनिट इज वोल्ट. Remember this. What is terminal potential difference? जो हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं ना, वो क्या निकल के आता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर यहीं लगा के करते होते हैं, वो निकल के आता है. अब नेक्स्ट कंसेप्ट इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव. व्हाट इज दिस EMF? So next concept is EMF. EMF means electromotive force.
ये एक काइंड की नाम फोर्स है पर ये एनर्जी है जो क्या लगाती है, फोर्स लगाती है किस पे, चार्जेस पे। फोर्स मतलब वर्क डन करवाती है चार्जेस पे, तो वो क्या आती है, ईएमएफ। ये एक तरह की एनर्जी है जो फोर्स लगाती है किस पे, चार्जेस पे, ताकि वो मूव कर सकें, मूव इन अ सर्किट, मतलब करंट फ्लो करवाने में मदद करती है। हर बैटरी की ईएमएफ होती है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, सपोज दिस इज अ सेल, ओके, मान लो हमें चार्ज यहाँ से शुरू करवाया, फ्लो करवाना यहाँ से सपोज यहाँ से काम वर्क डन करना शुरू किया चार्ज पे और कंप्लीट साइकिल कर दिया। कंप्लीट साइकिल में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो ईएमएफ है, वो क्या है, ईएमएफ है। अब तो यहाँ तक ही वर्क कर रहे थे, अब इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर भी वर्क डन अब करना पड़ेगा क्योंकि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है यार, तो वर्क डन कुछ ज़्यादा हो जाएगा। सो ईएमएफ क्या होती है, ईएमएफ इज द amount of work done on unit charge to move it through complete cycle of a circuit, complete cycle of circuit। तो ये पूरे में जो ईएमएफ होगी, इट विल बी, इट्स सिंबल इज ई और इट्स एसआई यूनिट इज आल्सो वोल्ट। तो जो वर्क डन करना पड़ रहा है यूनिट चार्ज पे टू मूव इट थ्रू अ कंप्लीट साइकिल ऑफ सर्किट। सो दिस इज अ कंप्लीट साइकिल ऑफ सर्किट। सारे पूरे का अगर 10 वोल्ट है ईएमएफ तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा थोड़ा सा। सो हमेशा जो हमारा वो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो लेस होता है एज कम्पेयर टू ईएमएफ। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ। भी ईएमएफ क्या होता है, क्योंकि सेल फर्स्ट हमने देखा व्हाट इज सेल, उसकी वर्किंग जानी, फिर हमने देखा भी सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, फिर हमने देखा भी सेल का ईएमएफ क्या होता है, फिर हमने देखा भी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब नेक्स्ट टर्म जो सीबीएसई में आता है ये है सीबीएसई में this definition is also there in CBSE। so next concept of CBSE is हमें relation ढूंढना है between the terminal potential difference and the EMF। so we have to develop a relation between terminal potential difference now you know what is terminal potential difference and EMF। okay, so what is there is a cell whose EMF is pose E and this cell is having some internal resistance। so these are the two terminals of a cell, this is A terminal, this is B terminal, okay, and this cell is connected across some load whose resistance is R and internal resistance of cell is small r। a cell of EMF E and internal resistance R, because every cell has internal resistance, is connected across a load of resistance R। okay, like this। so now suppose current I is flowing in the circuit, you can write also that
So now you know a cell is there. This is a cell which is having EMF E and the internal resistance R is connected across a load whose resistance is R. Okay, and current I is flowing in the circuit. You can mention also that current I is flowing in the circuit. According to Ohm's law, what is the value of current? What is the value of current? V is equals to IR. And what is the value of I? I is equals to V upon R. So what is the V? Cell की V क्या है? Cell की, that is E, EMF, total. And what is the total resistance? R plus R. There are two resistance, one is big R and one is small r. So the current flowing in the circuit is important, E upon R plus R. So V को मैंने E क्यों लिखा? क्योंकि सारे complete cycle का V क्या होता है? E होता है. Okay, we will discuss some special cases also. Now consider this thing. Multiply this denominator with I. So E is equals to I into R plus I into small r. This equation becomes like this. We know that, look at this circuit. अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ A और B के क्रॉस देखना चाहते हैं, यहाँ पर कितना आएगा? V कितना आएगा? I इंटू R. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A B means across cell, what is this? I into R. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ये तो सेल है, सेल के बाहर जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है? आई इंटू आर ही है, ओम्स लॉ कहता है. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, यू डोंट मेंशन ए बी, अक्रॉस सेल इज इक्वल्स टू आई आर. और 2 और 3 को कंपेयर कर लो, इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ? Compare 2 and 3. So we can put V in place of IR. E is equals to V plus IR. Okay. What is the value of V? V is equals to E minus IR. So this is very important relation. So this is the relation between terminal potential difference and the EMF of a cell. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EM से छोटा होता है, क्योंकि EM से कुछ कम होके ही आ रहा है टर्मिनल पोटेंशियल. EMF से अगर हम किसी चीज़ को माइनस कर रहे हैं तभी हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है. सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन, मीन्स इट्स लेस देन E. सो स्पेशल केसेस वी विल डू नाउ. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड द EMF. केस नंबर 1. ओके, इफ लोड रेसिस्टेंस, जो लोड रेसिस्टेंस है इनफाइनाइट है, टू मच वैल्यू उसकी इनफाइनाइट है, तो करंट कितना होगा? करंट दौड़ेगा उसमें? नो, देयर विल बी नो करंट, आई विल बी 0. देन आई विल बी 0 ना. पुट आई 0 हेयर. V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर. आई को 0 कर दो, देन V इक्वल्स टू E. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. When no current is flowing in the circuit ना, then terminal potential difference is equal to EMF of the cell. ये CBSE, it can ask by CBSE. So case number 2. When current is flowing in the circuit, then the relation between terminal potential difference and EMF is given by this relation. Okay. एंड ये भी स्पेशल है, V इज स्मॉलर देन E व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट. ओके, लाइक दिस. कोई ऐसा स्पेशल केस है जब
V बड़ा होगा E से, V तो कम आ रहा है E से। हाँ, देर एक स्पेशल केस होता है, वो आपको रिमेंबर करना है। ओके, जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं ना, तो तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किससे बड़ा आता है? E से बड़ा आता है। व्हेन वी आर चार्जिंग दी बैटरी, ये स्पेशल एक्सेप्शन है, व्हेन वी आर चार्जिंग दी बैटरी, वैसे तो V छोटा है E से, पर इस केस में V बड़ा आता है। व्हेन वी आर चार्जिंग दी बैटरी, लाइक यू आर चार्जिंग दी मोबाइल, then V is greater than E. But this is not in the NCERT, but you must remember. So this is an important case. This you also remember, this also remember. These are some facts. E is equal to E minus IR. So next concept is, we have reduced our relation of V is equal to E minus IR. This is very important concept. Okay. And now next concept is, we will find out the expression for internal resistance. So expression for internal resistance. First of all, where we will start this expression? We know V is equals to E minus I into R. We know. Okay. Like, get this thing on one side, IR is equals to E minus V. Okay. So this is, I think, not a big R, it's a small r. This is small r. V is equals to E minus small internal resistance. So here it is internal resistance. Here it is internal resistance. Okay. So we want to find the expression of internal resistance. So we have to keep it single, and I is in the multiplication mode. There it will go into the division mode. Okay. You know Ohm's law, V is equals to IR. Keep this as 1. And what is the value of I? I value is V upon R. Okay. So put the value of 2 in 1. Okay. So R is equals to E minus V upon R. So R will go upside. So R will go upside this, R will go here. So R is equals to R E minus V upon V. So R is equal to R E upon V minus 1. So this is the expression for internal resistance. So internal resistance is equal to big R, load resistance into EMF upon terminal potential difference minus 1. So this is done. So you know the value of current is I is equals to E upon R plus R. Remember this thing also, internal resistance also, and V is equal to Fe minus I into R. These are the three formulas we have deduced. 1, 2 and 3. One more thing CBSE can ask, भाई इंटरनल रेजिस्टेंस जो ड्राई सेल की होती है ना, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. यू हैव टू रिमेंबर दिस. आजकल जो ड्राई सुक्के सेल आ रहे हैं, ड्राई सेल, दे हैव मोर इंटरनल रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. सो ड्राई सेल हैव
more internal resistance, this can be asked in the CBSE because it's a NCERT concept. ये अलग क्वेश्चन हो सकता है as compared to electrolytic cell. Okay, so this is the expression for a current, and they can also ask when current can be maximum. Current can be maximum when this is minimum. R plus R should be minimum. R plus R minimum होने के लिए किसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा. ओके, करंट कैन बी मैक्सिमम इफ इट शुड बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो. छोटा कब होगा, जब इसको कम से कम ये तो ना ही हो, सिर्फ यही रह जाए. करंट विल बी मैक्सिमम. So this is second fact that can be asked in CBSE, when R equals to 0. When R equals to 0. And what will be the maximum value of then maximum current? I max will be equals to R को 0 करके जो भी आएगा वो लिख दो. This. So this can also be asked as a separate question in CBSE. Current will be maximum when R equals to 0. दोनों जीरो हो गए तो वो तो करंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. दैट इज़ नॉट द केस. हमें कम मैक्सिमम करना है. ये छोटी से छोटी कब होगी, जब ये कम से कम ना ही हो. So this is done. Internal resistance is done. Expression of internal resistance done. Expression of EMF and terminal potential difference done. Definition of terminal potential difference, terminal definition of EMF and working of cell. It's all has been done. So this is all for today. Next lecture, next concepts will be discussed in the next lecture. Thank you. Have a nice day.